This meeting is being recorded. Cool. So, beta, if you are new to the class, kindly send your messages to chat-question. Okay? So now, Walaikum Salam Rawaha. So now, this is our lecture number 13, and we are going to talk about, or we are going to solve more questions related to scalars and vectors. So let's jump to our class. Let me switch on the microphone so that you can contribute. Okay. So this was the question we had previously. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इतने बड़े मैसेज का मैं मतलब समझ सकता हूँ। माइक ऑफ था और ना आप जरूर माइक ऑन करके सलाम करते। ओके, अब माइक ऑन है। तो ये सवाल हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। उसके बाद हम अर्ली पास पेपर्स की तरफ जाते हैं एंड विल figure out which past papers we can do as far as scalars and vectors are concerned. Distinguish between scalars and vectors. How can you answer this question? That's against 1 mark. What is the difference between a scalar and vector? Anyone? जी शायन बोले, माइक इज ऑन। चैट ऑन कर दी, सॉरी। जी शायन बोले माइक ऑन है। Can you repeat the question? माइक ऑफ है। अच्छा, अभी चले, अनम्यूट कर दिया। जी बोले, सॉरी। Yes, sir, can you वेक्टर्स repeat? के बारे में बोल रहे हैं तला। वेक्टर्स हैव डायरेक्शन, scalars do not have a specific direction while vector do. Scalars have magnitude but no direction, but vectors have both. ठीक है मुबशिर, scalars have magnitude while vectors have both magnitude and direction. Yes, जी शायर। Extremely sorry, now you can unmute yourself. मुझे आइडिया नहीं था माइक ऑफ थे। Okay, so let's find out the scalars are specified by magnitude and unit only, while vectors require magnitude, comma, unit, as well as specific direction. ठीक है? Vectors can be negative, but scalars can't. ये भी लिख सकते हैं आप। Basically, negative in vectors explains us the opposite direction. एक मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। This meeting is being recorded. Underline all vector quantities. बेटा इसने अंडरलाइन बोला है तो यू विल डू अंडरलाइन। ठीक है, डू नॉट सर्किल, डू नॉट हाईलाइट, ओनली अंडरलाइन all vector quantities. So acceleration is a vector quantity. Energy किसी भी किस्म की हो, it's a scalar. ईमान is saying acceleration काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी किसी भी किस्म की हो वो स्केलर होती है। मोमेंटम होगा, यस। पावर नहीं होगी, वेट होगा। तो दीज आर द 3 वेक्टर क्वांटिटीज वी हैव। ठीक है, कूल। सो
a force of 7.5 Newton at 40 degrees act to the horizontal. Calculate the component of the force that acts horizontally. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसके साथ एंगल बनता है दैट कंपोनेंट इज कॉस फंक्शन। तो क्या होगा बेटा, ये वेक्टर है 7.5, तो 7.5 cos 40। And what will be the answer of 7.5 cos 40? जी बेटा 5.7. 5.7. Okay, let me start my calculator as well. Okay, so it's 7.5 multiplied by cos 40. So as you said, 5.74. तो राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में इट विल बी 5.7, ठीक है। सिमिलरली if the horizontal component is cos function, the vertical component will be a function of sine. So this will be 7.5 sine 40. $4.82. दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करके 4.8, ठीक है बेटा। जी अफीफा, it's 4.8. Okay, two strings support a load weight 7.5 Newton as shown. So this is the weight of 7.5 Newton, which is balanced by these two strings. सही है। One string has tension T1 at an angle of 50 degrees to the horizontal. The other string has tension T2 at an angle of 40 degrees to the horizontal. Object is in equilibrium. Equilibrium means it's balanced, ठीक है। Determine the value of T1 and T2 using vector triangle or by resolving forces, ठीक है। तो मैं रिजॉल्विंग फोर्सेस के थ्रू ये काम करके दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, लेट्स रिजॉल्व T1 इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। T1 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ये देखें। दिस विल बी वन component of T1 and this will be the other component of T1, ठीक है। जहां से एंगल बनता है वो cos का फंक्शन होता है, तो this will be T1 cos 50 and this will be T1 sin 50, ठीक है। Similarly, let's talk about this. ये एक कंपोनेंट हो गया T2 का and this is the other component of T2, ठीक है। तो जहां से एंगल बनता है डायरेक्ट कॉस फंक्शन T2 cos 40 and T2 sin 40. Now, can anyone tell इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? वैसे तो हमें आगे चैप्टर होगा फोर्स प्रेशर, नहीं क्या नाम है चैप्टर का नाम बोल दिया, फोर्स प्रेशर एंड डेंसिटी। तो फोर्स प्रेशर एंड डेंसिटी में हम बहुत डिटेल में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। यस, सेइंग व्हेन देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स,
यानी when there is no resultant force on y-axis and when there is no resultant force on x-axis, that is what you call an equilibrium, a condition of equilibrium. Yes, you both are right, Efra and Talha. ठीक है. So just if you अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम शोएब, क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं. I'm good, alhamdulillah, as always. Okay, so क्या होगा बेटा? अब देखें एक्स एक्सिस में सिर्फ ये दो फोर्सेस हैं. Since examiner said that it's an equilibrium, so this will be equal to this. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? According to first condition of equilibrium, along x axis. जब आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे, तो मैं आपको दो कंडीशंस पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम की, जो कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ी है ऑलरेडी. एक तो आपने खुद बता दिया, व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं. व्हेन रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो and when resultant force along y-axis is zero. These two are called as first condition of equilibrium, while the second condition of equilibrium is principle of moment. किसको याद है principle of moment का statement? What was the Total statement? upwards momentum is equals to total downwards momentum after collision. Yes, moment before collision and after collision. Oh, sorry. Moment, clockwise moment is equals to anti-clockwise moment at equilibrium. That was the second condition of equilibrium, जिसे हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के नाम से ओ लेवल्स में पढ़ा था. तो ये दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की. तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, यानी T1 cos 50 is equals to T2 cos 40. ठीक है, सो लेट्स सी cos 50 की वैल्यू क्या होती है. .6427, 0.6427 T1 equals to cos 40 क्या होता है? 0.766. ठीक है, now let's do one thing. T1 equals to 0.766 divided by 0.6427. अंदर डिवाइड करते हैं इसे. 0.766 divided by 0.6427, that is 1.19. So T1 is equals to 1.19 T2. This is our equation number 1. ठीक है, अब I will apply first condition of equilibrium along y-axis. We have first condition of equilibrium along y-axis. तो बेटा क्या है first condition of equilibrium along y-axis? There are three forces on y-axis. 1, 2, 3. Since they both are in same direction, they will be added up. And this is in opposite direction, it will be subtracted. Or you can say sum of these two will be equals to 7.5 Newton. So T1 sin 50 plus T2 sin 40 equals to 7.5. So sin 50 किसके बराबर है? I think it's equal to 0.766. Yes. So 0.766 T1 plus sin 40 है
0.64 to 7.5. अब देखिए इक्वेशन में दो अननोन है ना, यू कैन नॉट सॉल्व दैट इक्वेशन. दो अननोन कौन कौन से हैं? दिस वन एंड दिस वन. बट लकीली हमने T1 की वैल्यू निकाल दी है. So let's put this value here. Put T1 above. ठीक है. What we will do, 0.766 T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1.19 T2 plus 0.642 T2. Now, what is the multiple of 0.766 and 1.19? 0.912. 0.91. Yes. It's 0.91 T2 plus 0.642 T2. Let's have T2 common. तो T2 कॉमन निकालते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे and 0.91 plus 0.642 becomes 1.552. While T2 will be equal to 7.5 divided by 1.552. It's 4.83. Since it's tension, which is a force, so it will be in Newton. That is the final value of T2. And if you write down T2, write it into two significant figures, that is 4.8 Newton. Okay? So we have found out the value of T2. Now, how do we find out the value of T1? कैसे निकाले T1 की वैल्यू? We put the T2 value in the first Yes, equation. exactly. यहाँ पे put कर देंगे. Put T2 in equation 1. So that is हमारे पास T1 equals to 1.19 T2. So T1 equals to 1.19 multiplied by 4.83. It's 5.74. This is the value of T1. And in two significant figures, we will write 5.7. So this is how we solved the whole question. Okay, beta? It's a bit lengthy, but it also gives us 4 marks. Cool. Any questions up till now? We have completed this question. Walaikum Assalam, Shayan. Good, how are you? You got late? Okay, so let's move ahead. These were the two questions I designed. Sir, you make this look so easy. Thank you very much. So, वो क्या रहा बेटे? ये हमारे पास
बेसिकली होमवर्क का सवाल था, बट सिंस यू आर हैविंग वेक्टर्स लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, मैंने बोला ये होमवर्क क्लास वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? चलो सर यस बेटा। सर ये एएस की कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्या सेकंड? ये एएस की कौन सी क्लास है, कौन बोल रहा है? सर मैं शोएब बोल रहा हूँ। शोएब। शोएब ये जी सर। 13th क्लास है, लेक्चर नंबर 13। अच्छा सर, मैंने आज कंटिन्यू किया सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। ओके, हम बेसिकली पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं और पहले चैप्टर में 4 सेक्शन थे, तो ये चौथे सेक्शन के पास पेपर्स कर रहे हैं। ओके सर, क्लियर है। ओके चले, now let's go towards early past papers and let's do some early past papers which are on the topic known as vectors. Okay, we have one question from May-June 2018, P21. State what is meant by scalar and vector quantity. तो हम कैसे जवाब देंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? Quantities that require magnitude. Yes, quantities that are magnitudes only. बेटा राइट यूनिट एज वेल, ठीक है? एक क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी जरूरी है, ठीक है? तो जस्ट ऐड यूनिट इन बोथ quantities that require magnitude and unit only, and quantities that require magnitude comma unit as well as specific direction. ठीक है? हाँ ऐसा ही है. Scalar are the quantities that are specified magnitude in unit. They don't have a specific direction. Yes, you can write that they don't have a specific direction. Okay, complete figure 1.1 to indicate whether each of the quantity is vector or a scalar. Power scalar है. Scalar. Temperature भी Scalar. scalar है. Scale. And momentum vector है. AI have issue with the spelling. वाह भाई वाह. Look, इसकी पहली जो सजेशन है वो ये जो मैंने लिखा है. So bro, we don't need to worry about AI will not take over human race. We don't need to worry about. चले देखते हैं करता क्या है. वाह, क्या बात है भाई. I don't need your sympathy. चले आगे बढ़ते हैं. Aircraft is traveling in wind. ये एप्पल का कसूर नहीं है, ये गुड नोट 5 था, अब ये गुड नोट 6 आ गया है. तो गुड नोट 6 में एआई इंटीग्रेटेड है, तो ये गुड नोट 6 की मस्ती है. An aircraft is traveling in wind. Okay, figure 1.2 shows velocities of 4 aircraft in still air and in the wind.
तो बेटा स्टिल एयर में वेलोसिटी है हमारे पास ये, और विंड में वेलोसिटी है हमारे पास ये. The velocity of aircraft in still air is what? 95 meter per second to the west, and velocity of aircraft in wind is 28 meter per second from 65 degrees south of east. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो क्या बोल रहे हैं? साउथ ऑफ ईस्ट 65 डिग्री से. सही है? Okay, on figure 1.2, draw an arrow labeled R in the direction of resultant velocity of the aircraft. Okay, तो अब जरा गौर से सुनिएगा. Where should we draw the direction? No, I won't be surprised. When I used to be child, I tried learning the direction as we, we, then north south. So yeah, you can try this method. I also had difficulty in learning. One thing I learned in my life, if the things are difficult to understand, make your ways to understand things. Walaikum assalam, Rafi. Kindly send to the message chat hyphen question. Okay. तो बेटा देखें यहाँ पे टिप टू टेल रूल वायलेट हो रहा है. Why? Because एक वेक्टर का टिप और दूसरे वेक्टर का टिप दोनों साथ ज्वाइन हो रहे हैं, यानी असल में कुछ ऐसा होना चाहिए था. ठीक है? तो a tip of one vector is joined with the tail of other vector, and resultant क्या बनता है? Resultant starts from the tail of first vector with the tip of second vector. So this is our resultant vector direction. सही है? तो label this vector as R. This is the answer of C1. तो आपने इस तरह एक एरो बनाना है, एक एरो ड्रॉ करना है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में. ठीक है? आई जस्ट फॉलोड व्हाट? आई जस्ट फॉलोड टिप टू टेल रूल. चले आगे बढ़ते हैं. Determine the magnitude of resultant velocity of the aircraft. Okay, so we need to draw the vector, and for that what do we have to do? We have to first assume our scale. हमें अपना स्केल बनाना होगा. ठीक है? तो what, which scale do you suggest? मेरे पास ये दो वेक्टर है, दोनों का सेम स्केल होना चाहिए. Are you with me? If I say 1 centimeter equals to 10 meter per second, this will be the most sensible scale, I believe. Yes. So let's make our scale. Here our scale is 1 centimeter equals to 10 ms minus 1. So 2.8 centimeter represent करेंगे 28 ms minus 1, and 9.5 centimeter represent होगा 95 ms minus 2. यार एक मिनट रुकिएगा.
ओके, तो ये हमारा बेसिकली स्केल का सेक्शन हो गया. ठीक है, तो व्हाट विल डू, हम पहले 95 यानी मीटर पर सेकंड यानी 9.5 सेंटीमीटर बनाएंगे. लेट मी ब्रिंग माय रूलर. आई बॉट दिस रूलर फ्रॉम गुड ज्योमेट्री, अच्छी ज्योमेट्री. सही है भाई. तो दिस इज आवर रूलर. वी विल ड्रॉ. पहले मैं 95 मीटर पर सेकंड बना रहा हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे करके बनाइएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस भी दे दिएगा, मतलब टुवर्ड्स राइट कॉर्नर एंड आंसर से जरा सा ऊपर. तो दिस इज हाउ 9.5 सेंटीमीटर का वेक्टर बनेगा टुवर्ड्स वेस्ट, which is representing 95 meter per second. ठीक है, this is my first scale. It's the part of another app called Good Geometry. In Pakistani currency, it costed me around 1600 rupees. While the good notes is right now for one-time payment, it's 6900. Okay. तो ये तो हमारा एक हो गया. सही है, vector. Now we have to draw the second vector. And our second vector is basically making how many angles? 90 डिग्री से देखते हैं. अगर ये पूरा 90 डिग्री है, that is 65. इसका मतलब the remaining angle is how much? 25, है ना. तो अगर ये 25 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा? 25 डिग्री. So just for the sake of drawing the vector, I'll draw the vector at 25 degrees from 90 degrees. यानी कुछ इस तरह. Twenty-five degrees from 90 degrees. So 10 degrees, 20 degrees, 25 degrees. ठीक है. Now let me rotate my ruler. थोड़ा सा और रोटेट करना होगा. बस ये थोड़ा सा है ना, इसका tricky पार्ट है रोटेट करने वाला. बाकी तो अच्छा रोट है. होप अब ये सेट हो चुका हो. अभी भी थोड़ा सा फर्क है. We need to draw a scale diagram. That is why इतनी मशक्कत करना पड़ रही है.
Okay. This will work, I think. This will completely work. Okay. So what we have to do, मैं 2 पे रख रहा हूँ सर, ठीक है? हमें कितना बड़ा वेक्टर बनाना है? 2.8 centimeters का. So I'm choosing another or different color just to show the second vector. So ये वाला part मैं 6 पे रख रहा हूँ, ठीक है? So this is 1 centimeter, 2 centimeter. This is 2.8 centimeter. सही है बेटा? 1, 2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 in this direction. So that is basically 28 ms minus 1. Now, we don't need the ruler. Ruler को साइड में कर देते हैं. ये हमारा वेक्टर बन गया. Now we have to do, or we have to draw what? Resultant vector. And that resultant vector is basically a vector which starts from the tail of first vector to the tip of second vector. Okay? Now let's measure the length of this vector. Let me see. Perfectly aligned. So it's how much? Exactly 11 centimeters. ठीक है बेटा? So our resultant is 11 centimeters. So according to our scale, we said 1 centimeter equals to 10 meter per second. So 11 centimeter is equal to 110 ms minus 1. So the magnitude of resultant velocity is 110 and ms minus 1 already लिखा हुआ है. ठीक है बेटा? This is how we did our question. Understood? Yes, sir. Perfect. If you have any question regarding this topic or this question, how we use ruler and protractor, how we use the scale, you can ask. मुजफ्फर क्या पार्ट 2 में अलग बनाया? Can you unmute yourself? अशपार बेटा देखो मैंने एंगल कैसे रखा है. मैंने 90 डिग्री से देखा. ये पूरा 90 डिग्री है. तो अगर 90 डिग्री में ये पूरा 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री में इतना 65 है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 25 डिग्री. ठीक है? क्योंकि 65 प्लस 25 विल बिकम 90 डिग्री. तो मैंने देखा अगर ये 25 डिग्रीज है तो ये भी 25 डिग्रीज होगा. तो मैंने 90 डिग्री से 25 डिग्रीज पे सेकंड वेक्टर बनाया लाइक दिस. ये देखो 90 डिग्रीज पे ये 25 डिग्री. ये देखो 10, 20, अराउंड 25. सही है सर? ये शेप बेटा, ये शेप हमने कुछ नहीं किया है. हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया इस तरह और विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के टिप से ज्वाइन की यूजिंग टिप टू टेल रूल. एंड देन वी ड्रॉ रिजल्टेंट. वी मेजर्ड द लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट. वी कन्वर्टेड दैट लेंथ अकॉर्डिंग टू आवर स्केल, जो पहला स्केल हम लोगों ने चूज किया था. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर.
ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी और कोई सवाल स्केलर देन वेक्टर्स की डोमेन में लाई कर रहा है। May June 2017 E23. क्या कह रहे हैं सवाल में, देखते हैं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, on an object. Calculate the magnitude of resultant force R of these forces acting in opposite direction. तो बेटा opposite direction में क्या होगा? Both will be Subtract. subtracted. ठीक है, so this will be 7 Newton. But write your answer to two significant figures. Trailing zeros but decimal is considered as significant figure. At right angles with each other. तो बेटा जब दो वेक्टर एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे तो क्या बनेगा? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Yes. So if this one is 12, this one is 5, the resultant will be this. So we have right angle triangle. So Pythagoras theorem says under root 5 का square plus 12 का square. ठीक है, what happened to the calculator? Worry not. It's 13. So 13. Okay. Yes. Under root 5 का square plus 12 का square. 13. Yes. Cool. An object X rests on a smooth horizontal surface. The two horizontal forces act on X as shown in figure 1.1. A force of 55 Newton is applied to the right. ये बात हो रही है। A force of 18 Newton is applied at an angle of 115 degrees. इसकी बात हो रही है। With a direction of 55 Newton. Okay. तो ये देखें ऑलरेडी टिप टू टेल रूल फॉलो कर रहे हैं। एक वेक्टर का टिप दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन हुआ कर। यूजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और स्केल डायग्राम, इसमें चॉइस है। स्केल डायग्राम टाइम बहुत लेती है, so if you are given a choice of a scale diagram or resolution of forces, it's up to you. I prefer resolution of forces concept. To show the magnitude of resultant force acting on X is 65 Newton. ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? Magnitude of resultant acting on X is 65 Newton. ओके, चले देखते हैं। तो बेटा इसको तो रिजॉल्व नहीं करना बिकॉज इट्स अ लॉन्ग एक्स एक्सेस। व्हाट विल डू, इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा and the other component will be this. This side, this is 15 degrees, 15 degrees. तो इतना तो हो गया 90, ठीक है। बाकी ये क्या होगा 25,
ठीक है, अगर ये 25 डिग्रीज है, ये भी 25 डिग्रीज होगा, और जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, तो 18 कॉस 25, ये क्या हो जाएगा 18 साइन 25। पहले इनकी वैल्यू निकाल लें, 18 कॉस 25, अच्छा ये नीचे लिखना है, सॉरी, why the calculator is not working, let me see. Okay, so 18 multiplied by cos 25, 16.31, and 18 sin 25 क्या होगा, 7.60, ठीक है, तो ये हो गया 7.60, और ये क्या था हमारे पास 16.31, ठीक है। अच्छा अब देखें, this and this vector, they are in same direction, what will happen, they will add up, सही है, तो हमारी फाइनल डायग्राम क्या बनेगी, since 7.60 and 55 Newton are in same direction, so they add up, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 7.60 plus 62.6. 62.60 मीटर। तो अब देखिए हमारी डायग्राम कैसी बनेगी, टुवर्ड्स राइट वी हैव one vector as 62.6 Newton, and downwards we have another vector as 16.31 Newton, and the resultant of these two will be this. So now we can apply Pythagoras theorem. Okay, for the case of Pythagoras theorem, what do we do, resultant will be equal to under root 62.6 का स्क्वायर प्लस 16.31 का स्क्वायर, $64.68, तो क्या राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 65 न्यूटन। दिस इज व्हाट एग्जामिनर वांटेड, ठीक है, दैट इज हाउ वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्टेंट इज 65 न्यूटन, ठीक है। Yes. Yes, you can also write Mubashir 7.61, in the end उसे राउंड ऑफ होना ही है। Now determine the angle between the resultant force and 55 Newton. Okay, 55 न्यूटन इधर थी इस तरफ, ठीक है,
और यू कैन से दिस वे, आपसे ये एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्केल डायग्राम तो नहीं है, तो इसके थ्रू तो आप मेजरमेंट नहीं ले सकते। व्हाट डू वी नीड टू डू, हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, आपको रिजल्टेंट के दोनों कंपोनेंट्स चाहिए, यानी आपको ये भी चाहिए और आपको ये भी चाहिए। एंड विच एंगल यू आर फाइंडिंग, दिस एंगल यू आर फाइंडिंग, क्योंकि 55 न्यूटन वाज टुवर्ड्स राइट, तो वो बोल रहा है इस एंगल और रिजल्टेंट के दरमियान एंगल बताओ। सही है बेटा। तो जहां से एंगल बनता है दैट इज बेस, 90 डिग्री के सामने वाला hypotenuse that is required, and the third one is perpendicular, ठीक है। तो we need this angle, what do we do, what do we need, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, ये भी पता है। हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू बी ऑनेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर क्या है, वी यूज दीज टू टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर tan थीटा में आते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, perpendicular is 3.31 and this is 62.6. Okay, let me see what answer can be. Tan inverse (14.6 degrees), जो राउंड ऑफ सर होके क्या हो जाएगा 15। जी बेटा। सर मेरा एक सवाल है कि अगर हम लोग इस तरह करें कि ग्रीन फोर्स को हम पहले लिखें और उसके बाद फिर हम जो पर्पल फोर्स है उसको ऐड करें और फिर हम मतलब रीअरेंज कर लें फोर्सेस को यानी वेक्टर्स को और फिर हम रिजल्टेंट फाइंड करें तो सर फिर भी थीटा सेम ही आएगा ना एंगल, यानी जी, मतलब जो एंगल मतलब मैंने अभी किया मेंटली आप ये कहना चाह रहे हैं पहले आप ये करें फिर आप ये करें तो एंगल बनाए, बिल्कुल ऐसे। तो एंगल आप ये वाला देखेंगे फिर। सही है, ओके सर। तो वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, ये जो लास्ट पार्ट है ये कर सकते हैं हम। A third force of 80 Newton is now applied acts in opposite direction, ठीक है, to the resultant force। मतलब हमारा रिजल्टेंट आया है इधर, जो थर्ड फोर्स है वो इधर लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आवर रिजल्टेंट इज 65, द थर्ड फोर्स इज 80। तो क्या होगा बेटा, हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वी आर गिवन विद मैथ, बोला एक्सेलरेशन बताओ। व्हाट डू वी डू, सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो 80 minus 65 is the resultant force, 65 was our resultant, and 80 Newton is opposite to our resultant. Mass is given, acceleration needs to be found. So this will be 15 what is it, 5.55, so you can round it off as 5.6. सही है बेटा। This is how we did our question. सही है, cool, Yes. perfect। सर एंड अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, एक मिनट रुकिएगा, स्केल डायग्राम से करते हैं तो वही तरीकेकार इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर स्केल, देन वी हैव टू ड्रॉ बोथ वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू आवर स्केल, ठीक है, और टिप टू टेल रूल फॉलो करना होता है। यस बेटा।
सर मैं कह रहा था कि आप जो पास्ट पेपर्स वगैरह हैं और जो आपके पास ऑनलाइन फाइल्स हैं सर, तो वो आप ड्राइव पर डाल देंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सब मतलब मेरे उसमें आ जाए ना, आईपैड में, मतलब ताकि मैं उनको, क्योंकि मुझे आ नहीं रहा था करना ना कि फाइल्स किस तरह निकालनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं सारे पेपर्स की ना। तो मैं चाहता था, क्योंकि आपके पास तो मतलब पहले से ही है सारी, तो अगर आप उनको मतलब ड्राइव पे कर देंगे तो वो मतलब मेरे लिए जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। भी डाल देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक। तो हमारी एक होमवर्क की फाइल आएगी। इसके अलावा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। It's taking some time, recording तो ऑफ करें।